Hello class, welcome back. Welcome back to your computer class. So kids, in the last class we have seen, in our last class we have done um, the basic information about the MS Word, that we have completed all these things: scroll bar, status bar, Windows control button, and all those things. Now today we have to start from here. Today we have to start from creating a new document. Today we have to start from creating a new document. Although I have already given you some example of how you can create the document. So let us start. Now see what happens. A new document can be created by every time you start writing. What happen? A new document can be created by you every time you start writing a fresh letter. So this I have explained you yesterday also that whenever we type something न्यू, जब भी हम कोई न्यू शीट करते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट स्टार्ट करते हैं, तो इट्स लाइक राइटिंग ऑन अ फ्रेश पीस ऑफ पेपर, फ्रेश न्यू पीस ऑफ पेपर. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेश न्यू पीस ऑफ पेपर? जैसे आप क्या करते हो, आप अपनी कॉपी, जब आप न्यू कॉपी खरीदते हो, ठीक है, तो उसमें देखो फर्स्ट पेज इज लाइक वेरी क्लीन, है ना. बट सपोज करो आप कोई आंसर कर रहे हो और उसमें क्या हुआ कि आपका फर्स्ट पेज क्या हो गया, फिल हो गया. देन यू विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पेज एंड सो ऑन. तो जितनी बार आप फ्रेश पेज पे लिखते हो, ठीक है, तो क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट इज लाइक दैट ओनली. दैट मीन्स यू आर राइटिंग ऑन अ फ्रेश न्यू पेज. फ्रेश न्यू पेज पे आपने क्या किया है, अपना वर्क करना शुरू किया है. क्रिएटिंग न्यू डॉक्यूमेंट में यही होता है. सपोज मैं अभी क्या कर रही हूँ, सपोज मैं अभी क्लास फोर्थ के लिए कुछ पेपर बना रही हूँ. देन मुझे अभी क्लास फिफ्थ के लिए भी पेपर अगर बनाना है, तो आई कांट कंटिन्यू विद दैट क्लास फोर्थ वाला पेपर ना. So what I have to do there? What I have to do there? Yes, there I have to click on the new button. ठीक है, why? क्योंकि मैं उसी पेपर पे, एक पेपर पे मैं सारी क्लास का तो नहीं बना सकती ना, मुझे फ्रेश पेज की जरूरत होगी. सो इफ आई नीड अ फ्रेश पेज टू वर्क ऑन, सो दैट्स वाई मुझे क्या चाहिए होगा, न्यू डॉक्यूमेंट के लिए न्यू पेज चाहिए होगा. ओके, so I was explaining you that a new document can be created by you every time you start writing on a fresh letter or report. Each time each time you create a document, you are placing a new piece of paper on your screen. So what you are doing, you are you are pressing, you are placing a new sheet of paper on your screen. Okay, now next option is how we can do that. So first click on the file tab. First what you have to do, you have to click on the file tab. Now after clicking on the file tab, next option is click on the new button. So once you will click on the file tab, backstage view will appear. What happened? Backstage view will appear. Now click on the new button. Next option is that you have to click on the new button. After clicking on the new button, you have to click on the blank document. After clicking on the new button, you have to click on the blank document. Okay. Sample view of your sample view of your selected document appears in that area. Sample view of your selected document will appear in that area. Okay, now next last option is click on create. Last option is what? Click on create. Okay, the new document files opens and you can start adding your own data. The new
new document files open, and you can start adding your own data. Entering text. Now next is, देखो चलो इसको करके देखते हैं how we can start a new document. ठीक है, let us try to do this. तो okay, wait. So here I have opened Word. Okay, now see, if I'll click on blank document, ठीक है, चलो मैंने blank document पे click कर दिया. Now what happened? Once I have clicked on blank document, what happened? अब मुझे new page चाहिए. I want new file. तो मैं फाइल पे गई, देखो फाइल पे क्लिक करते ही व्हाट हैपन, यहाँ पे एक बैक स्टेज एक व्यू हमारे सामने आया था, जहां पे मेरे सामने न्यू के अंदर कई तरह के ऑप्शंस आई एम हैविंग. अंडर द न्यू आई एम हैविंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शंस हियर. नाउ सो देखो, फर्स्ट ऑप्शन इज व्हाट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट. सो आई विल क्लिक ऑन द ब्लैंक डॉक्यूमेंट और देखो व्हाट हैपेंड, आई हैव गॉट द ब्लैंक डॉक्यूमेंट हियर. गॉट इट. तो देखो इसी तरह से व्हाट हैपेंड, दिस इज द ओनली वे जिससे आप क्या कर सकते हो, जिससे आप क्या कर सकते हो, आप एक न्यू डॉक्यूमेंट अपने स्क्रीन पे क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट इज, आफ्टर दिस, नेक्स्ट पॉइंट इज एंटरिंग टेक्स्ट. ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन इज एंटरिंग टेक्स्ट. so now this question is about how we can enter the text. This question is about how we can enter the text. See, with the help of keyboard, you can enter the text in your document. So what you have to do, the text you type will appear where the insertion point flashes on your screen. So on your Windows screen, where the insertion point is flashes, there you can, what you can do, there you can insert your text. वहां पे आप अपने text को लिख सकते हो. तो it is important. देखो, let me show you. अब देखो ये जो डॉक्यूमेंट मैंने ओपन किया, इसमें देखो समवेयर हियर, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जहाँ पे मैम का माउस कर्सर है, वहां पे क्या हो रहा है, फ्लैश कर रहा है. वो क्या कर रहा है, स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है. तो जब मेरा डॉक्यूमेंट में वो चीज इधर फ्लैश कर रही है, फ्लैश पॉइंट इज दैट, तो दैट मीन्स इफ आई वांट आई कैन टाइप समथिंग हियर. मैं कुछ भी यहाँ टाइप कर सकती हूँ, है ना. गॉट इट. ओके. तो कहाँ पे, अब सपोज मुझे नहीं पता, अगर मैं फिर से देखूं अपने स्क्रीन पे, तो जहां पे देखो मेरा ये कर्सर है, इधर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फ्लैश पॉइंट, वहां पे मेरे स्क्रीन पे कर्सर क्या कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है. तो मैं कहाँ पे टाइप कर सकती हूँ, आई कैन टाइप देयर, आई कैन टाइप एनीथिंग, आई कैन टाइप देयर. ओके. Now, moving toward the next thing, after entering the text, let us see how we can enter the text. So first thing is that you, what you have to do, you have to type the text. What you have to do, you have to type the text. Okay. When you reach at the end of a line, so whenever you will reach at the end of a line, so what happen, the word automatically wrap the text to the next line. Okay, what happen, words automatically wraps the text to the next line. So this I will show you. Yeah, so I
was telling you about the wrapping the text. So मैम आपको क्या बता रहे थे? मैम was telling you that whenever you will write in one line, जैसे आपने अगर word में one line पूरी complete कर ली, देन आपको फिर एंटर टेक्स्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्ड ऑटोमेटिकली आपको नेक्स्ट लाइन में क्या कर देगा? रीडायरेक्ट कर देगा। वर्ड आपको ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में क्या करेगा? रीडायरेक्ट कर देगा। गॉट इट? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके नाउ चलो लेट मी शो यू हियर। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, हियर आई एम हैविंग लॉट्स ऑफ लाइंस। तो अब जब आप यहाँ पे देखो, जैसे इंडिया कंट्री दैट ऑक्यूपाइज द, नाउ इसके बाद व्हाट हैपन, ये ऑटोमेटिकली इसको क्या किया? नेक्स्ट वर्ड को नेक्स्ट लाइन में उसने क्या किया? सेंड कर दिया। नेक्स्ट वर्ड को इसने क्या किया? नेक्स्ट लाइन में सेंड कर दिया। नाउ सो व्हाट हैपन, ये ऑटोमेटिकली क्या किया? इसको नेक्स्ट लाइन में इसने क्या कर दिया? सेंड कर दिया। अच्छा, वन मोर थिंग नाउ, सी अब मैं इसको आपको करके दिखाती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, ठीक है। नाउ सी व्हाट हैपन, यहाँ तक पहुंचने के बाद मुझे एंटर नहीं प्रेस करना पड़ा, वो अपने आप क्या हुआ? लास्ट नेक्स्ट लाइन में क्या हुआ? वो रीडायरेक्ट हो गया। व्हाट हैपन? वो रीडायरेक्ट हो गया। नाउ रीडायरेक्ट हो गया नेक्स्ट लाइन में। ओके, मूविंग अहेड। So word automatically underlines the misspelled word in red and green. So this I have told you in one of the PPTs also, that word automatically underline the misspelled word in red and grammatical error in green. तो वर्ड क्या करता है? अगर आपके सेंटेंस में, अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई वर्ड या कोई स्पेलिंग गलत है, तो व्हाट इट डज, ये क्या करता है? रीडायरेक्ट करता है उसको। वो क्या करता है? उसको ग्रीन या रेड लाइन से क्या कर देता है? उसको अंडरलाइन कर देता है, वेवी लाइन से। ओके नाउ चलो, नेक्स्ट थिंग इज सेविंग अ डॉक्यूमेंट। सो द नेक्स्ट ऑप्शन दैट वी आर हैविंग हियर इज saving a document. So the document must be saved into the memory of the computer. What document is, how we can save the document? So the document must be saved into the memory of the computer for its future use. ठीक है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट मैंने बनाया, अब उसको मुझे तुरंत नहीं यूज करना था, उसको मुझे अपने फ्यूचर यूज के लिए रखना था। तो व्हाट आई हैव डन, मैंने क्या किया? मैंने उसे क्या किया? उसको सेव कर लिया। तो नाउ नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू रीड इज, नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इज, next thing we are going to do the saving a document, how we can save the document, that is the next thing we are going to do. Okay, now moving ahead. Now, so first you have to click on the file tab. Once you will click on the file tab, backstage view will appear. What happened? Once you will click on the file tab, backstage view will appear. Now click on the save or save as button. Next what you have to do, you have to click on save or save as button. After clicking on the save or save as button, you can click on the save button. Next option is what? यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आएंगे सेव का, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो? यू कैन सेव देयर। अब okay, you can click the save button on the quick access toolbar. And next is the save as dialog box appear.
अच्छा आगे what? Click on these areas to navigate to the folder in which you want to save the file. Next is you have to click on those area to navigate the folder in which you want to save the file. Then click on the save option. Next option is what? That you have to click on the save option. Okay. Chalo, moving ahead. Next thing we are going to read about is we are going to do it in our form. चलो इसको करके देखते हैं अपने डॉक्यूमेंट में. Let us do it. See what happened. This is the document. ठीक है. This is my document and now I want to save it. मुझे क्या करना है, इसे save करना है. So I will click on the file menu और file में देखो I am getting here save as option. Now here I am getting lots of option. You want to save as a copy online, rename the file, download a copy, download as PDF. So I can opt any one of these. ठीक है. So I have clicked on download as PDF. Now see your document is ready. You can convert it. Now what can I do? See my document is downloaded here. मेरी document क्या हुई यहाँ पे? मेरी document यहाँ पे download हो गई. Okay, so this is how you can save your document. Okay now. So I was telling you how to save a file. ठीक है, मैम ने क्या बताया कि कैसे हम किसी फाइल को क्या कर सकते हैं. How can I save a file? तो what is the way? Click on the file tab. Click on the save as option. You will get an option and from there save that file. Okay, now let us move ahead. After saving a file, next is, do you know? Okay, file created in Word 2010 is saved with the extension of .docs. .docs के extension के साथ क्या होती है? फाइल सेव होती है. Now keyboard shortcut to save a document is Control plus S. Control plus S is keyboard shortcut to save a document. Okay, so kids, here we have completed this chapter. We have completed this chapter here. Now moving ahead, next thing we are having self-evaluation. Self-evaluation. Okay, so let us do it. So first point is, I know that a word processor is a computer application that enables us to process textual matter. So I know that a word processor is a computer application that enables us to process the textual matter. So is it true or false? Yes, this statement is true. Agree. Now, next option is, I know that MS Word is a word processor program developed by Microsoft. So MS Word is what? MS Word is a word processor software developed by Microsoft. So you have to put a tick mark here. Now, third option. I know that the different component of MS Word windows are title bar, ribbon, file, tab, scroll bar, status bar and workspace. These all are the different component of the Word window. So is this statement true or false? So yes, this statement is true. So put a tick here. Now the next option. I know that the file tab is the main tab in the Word 2010. File tab is the main tab. So yes, correct.
Okay, moving ahead. I know that the ribbon offers an easy way to locate command that accomplish various program tasks. So yes, this statement is also true. Okay. So we have done this checklist. We have done this self-evaluation list. Now next is what? Next is our exercise question. Now, so let us do our exercise question. So our very first question is, dash is an example of word processor. So name the example of word processor. Is it MS Word? Is it MS Paint? Or it is Windows 8? What it is? MS Word, MS Paint or Windows 8? Among these, which of the following is a word processor? तो MS Word is what? A word processor. MS Word क्या है? एक word processor है. Okay. Moving toward the next question. Now next question says, dash is a flashing line on the screen that indicate where the typed text appear. Dash is a flashing line on the screen that indicate where the typed text will appear. So the typed text will appear where it will appear. What we call this flashing line. So see here a line is flashing. What you will call that line? Tell me what you will call that line. So that line will be called as, that line will be is known as, this line is known as insertion point. This line is known as insertion point. Now moving ahead. Our next question is, dash is situated at the bottom of the Word document. So which of the following is situated at the bottom of the Word document? So let me open a Word document. Now tell me which of the following is situated at the bottom of the Word document. Yes, it is status bar. It is the status bar here. Dekho, here you can see the status bar. So this status bar is available at the bottom of the screen. Okay. Now moving ahead. So the status bar, this status bar is situated at the bottom of a Word document. Now next is, shortcut key to save a document is, so what you have to do to save a document? Shortcut key to save a document is, to save a document what we have to press, Control plus O is for open, Control plus N is for new, and Control plus S is for save. So right answer is Control plus S. Now see, once again I am going to repeat my statement. Dash is an example of word processor. So MS Word is an example of word processor. Next, dash is a flashing line on the screen that indicate where the text type. So that is insertion point. Next is, dash is the situated at the bottom of a Word document. Status bar. Shortcut key to save a document is Control plus new. Okay, shortcut key to save a document is Control plus N. Control. Okay. Now next we have to do is true false. Next that we have to do is true false. Okay. So we cannot insert picture in Word document. So is it true? We cannot insert picture in Word document. Is it so? Can we or can we not insert picture in Word document? Tell me. We can insert picture in Word document. Let us see
whether we can do it or not. So here I have opened my Word document. Now the question arises where we can insert or we cannot insert picture here. ठीक है, the question arises क्या हम insert कर सकते हैं या नहीं. So first, to insert a picture we have to go on insert. So once we will go on insert, see here picture option is available. Picture option is available. So we'll click on picture. Now a dialog box appears. As you can see on my screen, a dialog box appears. Now what you have to do, this dialog box, you have to choose the file name. What you have to do, you have to choose the file name. Okay, then you have to click on the insert. As it is written here, no file chosen. That means अभी कोई भी फाइल क्या हुई है, choose नहीं हुई. So what you have to do, you have to choose the file name. Let us choose the file then. Okay. Choose file. ठीक है. Now we will click on the desktop. And suppose I want to insert this picture. Suppose I want to insert this picture. So I will click on this picture. I will click on open here. And I will click on insert. Now see what happened. This picture appears here, है ना? What happened? ये picture क्या हुई? मेरे screen पे ये picture आ गई ना? ये picture मेरी screen पे आ गई. Okay, see, so that means we can open picture. That means what happened? We can open picture. We can insert picture in MS Word. In MS Word, we can easily insert. We can easily insert picture. Okay. Now let us move ahead. Let us move toward the next point of our true false. Okay. Now the next option is word processor has replaced the electronic typewriter. So is it true or false? Word processor has replaced the electronic typewriter. Let us see. See, word processor has replaced the electronic typewriter in most offices as document can be edited, formatted and reprinted with ease. So what happened in your normal in your normal typewriter or in electronic typewriter, what you can do, you cannot edit or format or reprint. Okay, but in Microsoft Word or in any word processor, what you can do, you can edit your work, you can format your work and you can reprint your work. So these are the things that you can do with ease here. Okay, so Microsoft Word processor or any word processor has replaced the electronic typewriter in most of the offices. ठीक है, चलो let us move toward the next point. Now, the next option is ribbon displays group of related command in tabs. Ribbon displayed a group of related command in tabs. So, this happens, correct? जैसे मैंने यहाँ पे एक वर्ड फाइल खोली, अब यहाँ पे देखो होम में या इंसर्ट में मुझे एक जैसे ऑप्शन मिल रहे हैं. एक जैसे मतलब रिलेटेड कमांड मतलब अब देखो इंसर्ट में आई एम हैविंग पेज ब्रेक, टेबल, पिक्चर, एड इन्स. दैट मीन्स व्हाट आई कैन डू, इफ आई वांट आई कैन ऐड. यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन ओनली इंसर्ट इमेजेस. तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इंसर्ट कर पा रही हूँ. तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू.